आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The given question here is a passage and we have to answer the question given at the bottom. Let us read the passage. Not all agricultural societies become civilizations, but no civilization can become one without passing through the stage of agriculture. This is because at some stage in development of agriculture, as productivity improves, not all people would need to be engaged in producing or procuring food. A significant number of people could be freed up to pursue other activities such as building walls or monuments for new cities, making new tools, weapons and jewelry, organizing long distance trade, creating, creating new artistic masterpieces, coming up with new inventions, keeping accounts, and perhaps constructing new public infrastructure such as irrigation canals that further improve and improve the productivity of agriculture, thus realizing even more people to do new things. This can happen, of course, only if a society that has transitioned to higher productivity agriculture and has also, at some stage in its evolution, found a way to channel the bonanza of free time into other work fruitfully. In the ancient world, this often involved creating new ideologies and new hierarchies or power structures to coerce or otherwise convince large group of people to devote their time to the new tasks for very little reward. The question is, which word in the passage means changeover? The given options are option A transitioned, option B channel, option C coerce, and option D hierarchies, right? Now what does change over mean? Now change over basically मतलब होता है इसका कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाना, right? What does change over mean? Going from one stage to other, है ना? एक स्टेज से दूसरी स्टेज को जाना हम चेंज ओवर कहते हैं, राइट ना। अगर हम जो पैरा है उसको हम दोबारा ध्यान से पढ़ें तो हमें यहाँ पे एक वर्ड मिलता है ट्रांजिशन, राइट ना। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन का भी यही मतलब होता है गोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, राइट। वन स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाना उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, है ना। सो क्लियरली जो ट्रांजिशन वर्ड है पैरा में वो सिमिलर है इन द मीनिंग टू चेंज ओवर, देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।